Assalamu alaikum students, this is your teacher Mohammad Raza Hussain, and today's video is for those O-level students who have completed their O-level program and are now entering into their A-level program. Those of you who have chosen A-level economics, subject code 9708 are going to find this video extremely helpful, since this is going to give you an overall breakup of the syllabus, the routes to do your A-level program, the paper pattern, which is very important because the paper pattern was recently changed, and of course the assessment objectives and the key concepts behind the syllabus. This video is also going to give you a list of reference book and other references which you may find useful. Let's get started. So the question is, how do you do your A-level economics? The A-level economics is divided into two parts: the AS, which has paper 1 and paper 2, and the A2, which has paper 3 and paper 4. The first option is that you give all 4 papers in one series or in 1 year. Now that can be done, that has been done, and people do it. That is known as the Excel program. The second, more logical and conventional route is that you do AS in 1 year. अगर आप 2023 के अगस्त के अंदर बैठ रहे हैं in the subject, तो 2024 में आप AS देंगे और 2025 के मई जून सीरीज में आप अपना A2 देंगे logically. Option 1 choose किया जा सकता है, but that's a bad way to torture yourself. Go for option 2, much more logical. Okay, the syllabus of AS economics, अगर हम बात करें, is divided into 6 units. The first unit is the basic economic ideas and the resource allocation. Those who have done O-level economics will not find this difficult, but those who are coming from the science background, उनको इसको थोड़ा सा तवज्जो के साथ पढ़ने की ज़रूरत है, because this is your basic bedrock for all other concepts to come. Simple, don't get worried. It starts off with what the basic economic problem is, what are the resources, which are also known as factors of production, FOPs, the favorite production possibility curve, PPC, classification of goods and services, public good, merit good, private good, demerit good, etc. And the different economic concepts you need to know when analyzing problems, such as normative positive statements, the difference between long run, short run, and very long run, etc. The second unit is the price system and the microeconomy. This is a fairly large unit and fairly important one also. It looks at what the market economy is and how the price mechanism is used to allocate resources. Demand and supply की यहाँ पे बात होती है. It's pretty extensive, and different type of elasticities. There are 3 type of elasticities which are being discussed for demand and 1 for price elasticity of supply. आप इकोनॉमिक्स में ओ लेवल्स में 2 करके आते हैं, पीईडी और पीईएस, तो यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा एक्सटेंसिव है, नॉट दैट डिफिकल्ट. एंड surpluses. Surpluses are also very important for your A2 analysis. So this is a part where you would need to understand. थोड़ा सा इसको ज़्यादा importance मिली है इस दफ़ा के syllabus में, consumer surplus or producer surplus. Then we go to the government microeconomic intervention. Microeconomics का मतलब होता है of an individual market, right? Individual market, यानी कि the market for chocolates, the market for cars. When you're analyzing individual markets, that or individual households, you're talking about the microeconomy. So why would the government want to interfere in the operations of a market? उसकी reasons क्या हैं, उसके methods क्या हैं, and how does the government ensure that the income inequality is reduced? Then you come to the macroeconomy. The macroeconomy is talking about the economy as a whole, and what are the objectives of the government: the national income, the aggregate demand, aggregate supply model, growth, unemployment, price stability, which is also known as inflation. Government macroeconomic intervention. Government macroeconomic अपने ऑब्जेक्टिव्स को किस तरीके से सेट करती है और उसको किस तरीके से अचीव करने के लिए पॉलिसीज इंप्लीमेंट करती है. इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज, दिस इज इम्पोर्टेंट because it covers international trade, the different ways to protect yourself or your economy from imports. Balance of payments, उसका हम सिर्फ करंट अकाउंट पढ़ेंगे और बाकी की चीज़ें हम A2 में पढ़ते हैं. एंड सम पार्ट ऑफ एक्सचेंज रेट और टर्म्स ऑफ ट्रेड A2 में भी कवर होता है. A2 syllabus is also divided into 5 units. The syllabus is going to start from the price system and the microeconomy. Basic resource allocation में कोई chapter allocate नहीं है.
ये याद रखिएगा कि in A2 the concepts which you learn are new and they may be different from what you have done earlier. So it is extensive. आपको time देना है इसको. You will be doing utility. It's a very nice concept, and that is the concept on which the demand curve is based on. Then you're going to do the ICBL, which is the indifference curve, and the budget line. You're going to talk about market failure and efficiencies. Then you're going to talk about cost benefit analysis, the profit function, the market structures, survival growth, and other objectives of firm. This unit is pretty big and it is important as far as your microeconomics portion of the syllabus is concerned. Then we move to government microeconomic intervention. उसमें policies to reduce market failure है, equity है, sorry for the second Y, distribution of wealth, labor market forces, which is different from what you have done earlier, and government intervention. Then you're going to study macroeconomy as a whole. You're going to study the circular flow of income, something about the multipliers, economic growth, sustainability, employment, money and banking. Money and banking is new. इसमें demand for money है, supply of money है, liquidity preference theory है. It is large, अच्छा खासा बड़ा है और important है. Government macroeconomic intervention में objectives हैं, interrelated and effectiveness है, more of the same what you have done earlier also, so not that tricky but important. International economic issues में balance of payment है, exchange rate है, from AS उसकी continuation है, economic development. Now development plays a very important part in your A2 syllabus. Previously what used to happen in the old pattern of the paper that you would get almost, it was a certainty that 25 mark का एक ऐसे आता था on the development या developing economy या different indicators पर आता था. Economic development है, characteristics of countries at different levels of development है, globalization as a whole है. So this is the A2 syllabus. Now if you say that the A2 syllabus is divided into 5 units, but that is huge, अच्छा खासा syllabus है, अच्छी खासी चीज़ें हैं. मैं तो ऊपर से सिर्फ कवर किया है. It is when you go into depth you will understand that there is a lot of things to cover. So इसमें time waste मत कीजिएगा and please try to understand. इसमें crash course is not effective unless and until you have had a solid background. जब तक कि आपकी base नहीं होगी, revision courses, दूसरी चीज़ें will not help you that much. That is just an opinion though. Now let's talk about the paper breakup. In the AS and A2 you have two papers each. In AS आपके पास paper 1 है which is MCQ based. Paper 2 is an essay based paper. इस पे exclamation mark क्यों लिखा हुआ है? I'll just explain it shortly. In A2 you have paper 3 of MCQs and paper 4 is an essay based paper. The marks for AS paper 1 is 30 and for P2 it is 60. For P3 it is 30 marks and then for P4 it is again 60. 60 मार्क मिनट्स का आपका पेपर 1 है, 120 मिनट्स 2 घंटे का तकरीबन आपका पेपर 2 है, 75 मिनट्स का आपका पेपर 3 है, 120 मिनट्स और का आपका पेपर 4 है. So this is how the split of the paper is broadly. But when you come to the weightage is 17% in the overall A levels. जो आपका स्कोर है उसके अंदर जो है आपका पेपर 1 will have 17% of your weightage, paper 2 will have 33%, paper 3 will have 17% and paper 4 will have 33%. इसीलिए it is very important for you to take very high marks or a higher level of marks in paper 1 and paper 3 क्योंकि उसका भी 17% उस component का लिया जाएगा in the overall weightage. So अगर आप ये सोच रहे हैं कि 30 में से 20 is a good score, think again. That's not a right way or a right approach to think. थोड़ा सा visually मैं आपको explain कर दूं कि how do the papers look like. So the paper 1 will have 30 MCQs. That's why the dot, the 15 on one side and 15 on other. Paper 2 will be divided into 3 sections. The first section is going to be a data response, which is a case. उसके अंदर पार्ट्स में कोई चॉइस नहीं होती. इट इज गोइंग टू बी ऑफ 20 मार्क्स. यूजुअली उसके अंदर मैक्रो के एलिमेंट्स कवर होते हैं. इन माइक्रो इकोनॉमिक्स द सेकंड सेक्शन इज गोइंग टू बी माइक्रो, जिसके अंदर जो माइक्रो के एएस का पोर्शन है उसके अंदर से क्वेश्चन आएंगे. 2 आएंगे, आपको एक चूज करना है. 2022 तक
जो मई जून तक जो सिचुएशन थी वो ये थी कि आपके पास 3 क्वेश्चंस थे जिसमें से आपको ए करना होता था इन सेक्शन बी, मगर अब उन्होंने एक सेक्शन बढ़ा दिया है इन द फॉर्म ऑफ मैक्रो। मैक्रो और माइक्रो अलग अलग कर दिए हैं। अब आपको दोनों में से एक एक चूज करना है। अभी भी उसके अंदर जो है हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट इज गोइंग टू बी एन एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन जिसमें 8 मार्क का है, और द सेकंड इज गोइंग टू बी एन एवेल्युएशन बेस्ड ऐसे जो कि 12 मार्क का है। तो टोटल मिला के आपको 20 मार्क का एक क्वेश्चन करना है माइक्रो के सेक्शन में से, 20 मार्क का एक क्वेश्चन करना है फ्रॉम मैक्रो। तो चॉइस जो है वो 50-50% की है फ्रॉम ईच। तो 3 क्वेश्चंस आप करेंगे ऑफ 20 मार्क ईच। इसके अंदर से तकरीबन जो है दिस इज गोइंग टू बी ऑफ 60 मार्क्स। पेपर 3 इज अगेन गोइंग टू बी ऑफ 30 एमसीक्यूज। पेपर 4 पे अगर आ जाते हैं तो A2 का जो पेपर है उसका थोड़ा सा डायनेमिक डिफरेंट है। वो ये है कि इसमें भी 3 सेक्शन है, इसमें भी एक डेटा रिस्पॉन्स की केस स्टडी है जो 20 मार्क्स की है, लेकिन इसमें जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेक्शन है उसमें आपको पार्ट्स नहीं होंगे, 2 क्वेश्चन होंगे 20-20 मार्क ईच के, और वो आपने उनमें से एक चूज करना है। मैक्रो में भी 2 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स ईच, आपने एक चूज करना है। So please remember that the focus on your A2 is writing long essays. ऐसे mindset आपका होना चाहिए, argumentative होना चाहिए, where you're presenting sides and then you have to choose a particular side. The evaluation portion plays a very big impact in your A2. So writing is one of the key skills you should be working on. इस इकोनॉमिक सिलेबस के कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं जो इस सिलेबस का बैकबोन है, और वो आपको एज अ कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। First of all, you need to understand that what is scarcity and how it affects the permanence of choice. Scarce resources का मतलब होता है that the resources are less as compared to needs and wants, and that would result in choice. Then the concept of margin and decision making. Margin का मतलब होता है additional, एक और निवाला, one more unit which you're going to produce. Marginal plays a crucial role in your A2. That is a concept which you need to master. Equilibrium and disequilibrium. When is the market is in equilibrium? When is it in disequilibrium? उसको equilibrium में कैसे लाया जाता है? How does the government actions cause disequilibrium और उससे क्या होता है? Time. कोई चीज़ का impact अगर हो रहा है तो you need to understand and analyze what is the impact of time. यानी कि short run में वो चीज़ कैसे होगी, long run में कैसे होगी, और very long run में वो कैसे होगी. Efficiency and inefficiency. Efficiency का मतलब ये है कि how are resources being utilized, effectively utilized, and what are the reasons जिसकी वजह से inefficiency हो सकती है. A2 में बहुत बड़ा इसका रोल है, even in AS है, different types of efficiencies हैं. The role of the government and issues of equality, another very important, and progress and development. ये वो पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर आपका A2 का जो सिलेबस और AS का जो सिलेबस है वो जज किया जाता है in all the different questions and context. Another very important point in the entire syllabus is to understand the assessment objectives. पहला जो assessment objective है जिसके ऊपर आपको जज किया जाएगा in the economics course is knowledge and understanding. याद रखिएगा कि एप्लीकेशन वाला जो पार्ट है वो अंडरस्टैंडिंग कहलाता है, राइट? सो इट हैज बीन क्लब्ड इनटू वन एंड इट हैज रफली अराउंड 33% वेटेज ऑफ द ओवरऑल सिलेबस, जिसमें आप फैक्ट्स, फार्मूलाज, डेफिनेशंस, एग्जांपल्स, एक्सप्लेनेशन, एप्लीकेशन एंड डायग्राम, ऑल ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूट द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग मार्क्स. When you come to AO2, that is the assessment objective 2, that is the analysis bit. Analysis means cause and effect of changes in economic variables, advantages, disadvantages. ये करेंगे तो क्या होगा if A is results in B and B results in C, that is analysis. एक बात का ख्याल रखिएगा कि advantages and disadvantages both are part of analysis, not evaluation. What evaluation is? Here it is. Evaluation, which is the third assessment objective, is to recognize assumptions and the limitation of those assumptions. Right? ये पिल, ये दवाई आपको फायदा देगी कहां तक, उसके लिए ये assumptions और शर्तें हैं. हो सकता है आपको फायदा ना दे. क्यों? बिकॉज ये assumption इस बेसिस के ऊपर खत्म हो सकती है बिकॉज ऑफ दीज रीजंस. हम क्या करते हैं, हम डिसएडवांटेज लिख देते हैं. डिसएडवांटेजेस इज द नेगेटिव साइड इफेक्ट ऑफ द पिल. वो आपका एनालिसिस में आएगा. इवैल्यूएशन में यू आर डिस्कसिंग व्हाई समथिंग वर्क एंड डिड नॉट वर्क. उससे नुकसान क्या हुआ है, दैट इज
एनालिसिस वो हम क्या करते हैं अमूमन वी राइट इट इनटू इवैल्यूएशन एंड वी से कि यार हमें इवैल्यूएशन के नंबर नहीं मिले विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इवैल्यूएशन इज limitations of model arguments reason judgment and value judgments and conclusion. This is part of your evaluation model. A very important question which comes up while we're discussing the syllabus is that कौन सी book जो है वो is the most appropriate for this, and no doubt the new version of Colin Bamford, which is the first book from your left, Economics by Cambridge International AS and A-Level Economics 4th edition. It is no doubt a very good book, much improved from its earlier predecessor, which was shitty. It was incomplete. पहले वाली जो थी it would have very scarce material on A2, and you had to rely on other reference book for better marks. But this time around, Cambridge really has given a very complete and comprehensive reference book for its syllabus. This is my opinion entirely. The second option you could go is with Hoarders, and that is the name of the publication, Cambridge International AS and A-Level Economics Second Edition, which is the second book on your screen in the middle. This is a fairly easy book. Is thin on details, but still is comprehensive enough. Oxford Cambridge International AS, which is the third book from your left and the first book from your right. That is also it also covers a lot more things, but in an easier format. इन तीनों में से सबसे अच्छी कौन सी है? पहली वाली. फ्लेवर के लिए कौन सी है? आखिरी वाली. ये हम ले सकते हैं, मगर जो एक्चुअल सरप्राइज बोनांजा है वो है ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, which is this. This is Imran Latif's 4 books, जिसमें पहली जो 2 किताबें हैं. This is by Read and Write publisher, and I'm sorry for the bad pictures. This is what I could get from the internet. These are the first 2 books are for AS, and the second book, book 3 and book 4, are for A2. Book 3 covers the A2 microeconomics, and book 4 covers the A2 macroeconomics. For me, they are the go-to books. They cover all the things which are required and little bit extra. Little bit extra may bother a few students, but it is comprehensive enough to give you a leverage over other books and reference material. ये बहुत सारी बुक्स का ऑलरेडी compilation है, मतलब they take help in a lot from a lot more different books, but the content is pretty well assembled, so you will get a lot more information to write your answers. ये आपके पास must have होनी चाहिए, ये अपने पास लेके रख लें. For reference book, those जो आप लोगों में से बहुत चीते हैं and who are aiming for the sky, John Sloman is another book. It is the standard go-to book for other teachers as well, but I personally believe that the Foundation of Economics by Andrew Gillespie from Oxford is also a very nice book. इसमें कुछ चीज़ें covered नहीं हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो A-level syllabus की हैं वो बहुत डिटेल में, जैसे मनी एंड बैंक का चैप्टर बहुत मज़े से बताया गया है. It's easy to read also, इसके diagrams भी बहुत comprehensive हैं, so overall it's a very nice book. Okay, now we are coming to the end of the video. It is a longish video, but this is important. Now, when you're doing your A-level course, not every answer is going to be given from your books. You need to develop a different set of mindset, जिसमें आपको जो दुनिया की इकोनॉमी है उसके बारे में पता लग सके, आपके मुल्क में क्या हो रहा है, so that you are able to relate with what you have studied. Profit Magazine का जो YouTube channel है, that is very important, and that is very they present economic concepts in a very lively manner. Humor का element है. One of the channels I really like on YouTube is Adil Azhar's. इन्होंने recently अभी economic terms की एक वीडियो की थी, जिसमें inflation की वीडियो मैंने देखी हुई. He has presented that in a very layman term. बहुत मजे से उन्होंने उसको explain किया है. और generally जो है वो मुआशरे पे तबादला ख्याल करते रहते हैं, माशियात पे भी तबादला ख्याल करते रहते हैं. So that's a pretty good channel to subscribe to. The other information regarding Pakistan you can get in the economy and the other things, and on especially the socio-economic aspect, is the Pakistan Experience.
जो शहजाद गयास करते हैं, वेरी नाइस चैनल। उसमें कुछ चीज़ें जो है वो हाई फ्लोन होंगी, शायद आपको समझ में नहीं आएंगी, बट इट इज़ गोइंग टू गिव यू अ फ्लेवर फॉर थिंग्स टू कम। तैमूर, डॉक्टर तैमूर रहमानी इज़ अ प्रोफेसर एट लम्स। लाल इनका बैंड हुआ करता था और अभी भी है। लेफ्टिस्ट सोच रखते हैं, लेकिन वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड सम ऑफ द इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स, बहुत मज़े से उनको पढ़ाते हैं, उर्दू में ज़्यादातर इनके लेक्चर्स होते हैं। सो इट्स अ नाइस चैनल टू सब्सक्राइब टू। देयर आर अदर लेक्चर्स, अदर पॉडकास्ट ऑल्सो। मुज़म्मिल हसन का है, आई थिंक आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द channel. So there, and please have a very strong grip on the local news channels and dailies, especially the English ones also. CNBC की bites आती हैं जिसके अंदर आपको डिफरेंट कार्टेल्स, दूसरी चीज़ों के बारे में पता लगता रहता है। सो आप अपना इकोनॉमिक माइंडसेट बनाकर रखें। आखिर में भाईजान कुछ ज़रूरी हिदायत before you embark on your journey. The first thing is that those of you who are relying on chat GPT, you have to understand that it may give you answers which are not based on A level syllabus unless and until you prompt it. तो आपको कोई चीज़ का जवाब मिलेगा जो हो सकता है MPhil से रिलेटेड और आप बोलेंगे हैं ये क्या है. The second is try developing an economic mindset. You need to be aware of what is happening around you ताकि आप चीज़ों को relate कर सकें. जो चीज़ों का आप लिंक अपने दिमाग में बनाएंगे वो आपको याद रहेंगी. If you're able to apply the concept to your daily lives, वो आपको याद रहेगा. Uh, if you don't revise your daily lecture, implosion. जैसा से अभी अफसोसनाक वाकया हुआ था टाइटन का, पिचक गई थी, आपका जो माइंडसेट है वो भी इसी तरीके से पिचक जाएगा. इफ यू आर, बिकॉज द प्रेशर विल बी सो ह्यूज, आप एक लेक्चर मिस करेंगे वो इट इज गोइंग टू स्नोबॉल इनटू अ नाइटमेयर. पेपर 1 and 3 आर पावर प्ले जोन्स. दे आर हाई स्कोरिंग बट रिस्की ऑल्सो, क्योंकि इसके अंदर आयमाय शाइनी होती है, या तो यस है या तो नो है, आता है या नहीं आता है. तो जितनी आप पेपर 1 और पेपर 3 की तैयारी पहले से करेंगे, एएस में पेपर 1 की तैयारी शुरू से करेंगे और पेपर 3 A2 में तैयारी पेपर 3 की शुरू से करेंगे, उतना आपका फायदा है. अमूमन what happens is that the children start preparing for it once they are done with their CIE पेपर 2 एंड पेपर 4 के, यार अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, बाद में देखेंगे. उसमें आपको मोमेंटम ही नहीं बनता. आप कौन से नेक है, एक दफा जब आप पेपर कर लेते हैं तो उसके बाद आप कहते हैं ठंड मस्त, राइट, बिंदास हो जाएगा. यू डू नॉट पे द इनफ अटेंशन टू गेट अ हायर ग्रेड. यहाँ पे फिर आपकी विकेट उड़ जाती है. शॉर्टकट्स टू सक्सेस इज वेरी सिंपल. राइट राइट राइट. राइटिंग एबिलिटी आपकी अच्छी होगी, यू विल स्कोर हाई. वो कब अच्छी होगी? व्हेन यू द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर. जब आपके पास लिखने को मंजन होगा. वो कब होगा? जब आपको समझ में आएगा. तो इसीलिए दिस इज अ स्लो प्रोसेस, दिस इज अ लॉन्ग प्रोसेस. Start working from day one for a better grade. I hope this video was informative and inspirational to you. Thank you so much for watching.